कर दिया, start हो गया. So at the end of third year, if you want to return the money, you will be returning the principal, which is 100, and interest of 3 years, and which will be same as the interest is being calculated on the same principal. Okay, so every year the interest amount will be equal. So this is how we calculate simple interest. So now we have three terms. One which is principal, principal. Second, interest. And third term, amount. So sometimes the principal will also be called amount, but it's a bit general way of representation. So amount is the value which you get by adding interest to the principal. So if you have taken a loan of, let's say, 8,000 on simple interest, so there will be a rate of simple interest which will be represented as PCPA, percent per annum. Like we have been calculating here, the interest on 10% per annum. So if the simple interest is 5% per annum, so amount after 1 year would be 8,000 plus 400. 5% of 8,000 is what? 10% of 8,000 is 800. So 5% of 8,000 is 500. I hope every one of you knows how to calculate percentage. So at the end of second year, if you want to return or if you want to know the amount, it will be 8,000 plus 400 plus 400. But if you want to know just interest, you'll be say at the end year, it will be 400. At the end of 2 year, it will be 400 plus 400. At the end of n year, it will be 400 into n. So basically, we calculate interest of 1 year. So we say that principal into R%. And how do we calculate interest for n year? Is principal into R% into n. It is for 10 years. Or in SICI, T generally denotes the number of years. So let's say we'll call it T, the time. So the general formula that you have all known since childhood is PRT divided by 100. And this formula actually made everybody dumb. Why? Because we don't need to use this formula. See, if, and here comes the important part here. So let me tell you an example and give an example. Let the loan amount is 1,800 rupees. SI is 5/1/3%. Okay, 5/1/3%. And time is 2/1/3 years. Okay. And before I solve this example, let me give another example or little easier example. Let me say that the simple interest is 5% per annum. So after 1 year, at the end of
first year, the interest you will be getting is 5%. At end of second year, the interest you will be getting is 5 plus 5%, which is 10%. Why? Because you are calculating the interest on the same principal. So that's why in the second year, you will also have the 5% of the same amount. So that's why you will have total 10% of the same principal. So after 10 years, you will be returning 50% as interest. And after T years, you will be returning 5 into T% of. So either you can calculate interest or you can calculate the percentage first, you know? Or you can calculate both differently. Like, let me give you a simpler example again. Let's say there is an principal of 1600 rupees. Simple interest is 81 by 3%. And time is 3 years. See, what will happen if you want to calculate the simple interest? You'll say 1600 into 81 by 3 into 3 divided by 100. It will take some time to calculate, but I can easily calculate total percentage that I will have to give as an interest. So in first year, you are paying 81 by 3% as interest. In second year, you will be paying 81 by 3 again. In third year, you will be paying 81 by 3 again. So the total interest after 3 years would be what? 25%, because adding this interest 3 times is much easier than doing this calculation. So now once I know that the interest is 25%, I just have to calculate the 25% of 1600, which is 400 rupees. So we can just calculate the percentage first, or we can calculate the interest first also. So in this case, let's come to the example which I have already mentioned. In this case, you can see the simple interest is also typical, not very typical. It is just fractional representation of simple interest, and time is also there in fraction. So I'll see that this is, it will be easy to calculate 1 year interest first. So the 1 year interest will be 1 year interest will be 18 into 5 plus 6. Everybody knows how to calculate percentage. The 1% of 1800 is 18. So 5% would be 18 into 590. And since 1% is 18, so 1 by 3% will be 6. So the total amount of interest in 1 year will be 96. So what I did, I calculated the interest first, interest for an year first. Then I will add this interest for the required time, like it will be 96 plus 96 plus 32 for this 1/3 of the year. So the total amount of interest that I need to give will be how much? 32 minus 8. 224. So by this way, you can actually reduce your calculation. So let me give you another example. Let's say a principal is 2400 rupees. The simple interest is
simple interest is 6 1/4%. What will be the interest after 4 years? So by which way we can calculate this easily? So what you need to do here, क्या करोगे तुम लोग? परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी है या फिर इंटरेस्ट निकाल के 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के फाइनल इंटरेस्ट निकालना इजी? विच वन विल बी इजियर? बताओ। कौन सा आसान होगा? कोई भी बोलो, एनीवन। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो Yes, sir. कार्तिका, तुम बोलो। कार्तिक, कार्तिका नाम है ना तुम्हारा, द न्यू स्टूडेंट? हाँ बताओ, क्या आसान रहेगा? टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करना या फिर 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के फिर टाइम से मल्टीप्लाई करना? चलो तुमको छोड़, बताओ। कोई और बताओ, आसिता तुम बताओ। सर मुझे लग रहा है 1 साल का पहले करके। अच्छा, तो वो भी, हालांकि इसमें दोनों ही आसान है, बट अगेन टोटल परसेंटेज निकालना इज मच इजियर हियर, बिकॉज आपका 1 साल का इंटरेस्ट 6 1/4% पर एनम है। 4 साल में ये इंटीजर हो जाएगा, देखो। ओ हाँ सिक्स हाँ वन बाई फोर प्लस 6 1/4 प्लस 6 1/4, in 4 year it will be 25. हाँ हाँ करेक्ट। So you can easily calculate 1/4 of this number to calculate 25%, which is 600. ठीक है? So the first kind of question which you can encounter in simple interest question will be based on this only, because they will give you a very matlab like difficulty or different kind of principle and SI and time, so that PRT by 100 would be difficult to calculate, है ना? तो वैसे केसेस में you need to remember, either you can calculate the interest percent first and then you can calculate the interest, or you can calculate 1 year interest first and then you can calculate total interest by multiplying it to the time. So the general look of simple interest or the amount after simple interest will be P plus I plus I plus I plus I and so on. Okay? So this you will remember. Okay. So let's go for the second type of question. Sometimes they will give you that a principal became principal became 1200 in 4 years and 1350 in 7 years. Find principal and rate of interest. Of course, SI. So how will you solve this? So you can just see the look or the representation of amount which I gave. It is like there, if there is a principal P and I is the interest that you are getting. So after 4 years, I will be at this position. I will be at this position and the entire amount P plus 4I would be 1200.
and after 7 years, I will be at this position. So entire amount till this point would be 1350. So with these two figures, we can easily say that 3 time interest is 150. So I is equal to 50. And since I is equal to 50, then 4I would be what? 200. Then principal will be what? 1000. So once you got principal, which is P, and you have also got interest for an year, which is 50. So rate of interest SI is 5% per annum. समझ में आया तुम लोगों को? आप इस स्ट्रक्चर में विजुलाइज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है? क्लियर? सर मुझे नहीं समझ आया, P1000 कैसे आया? प्रिंसिपल प्लस 4I कितना था? 1200 था. हाँ, I कितना आया? 50. तो उसमें 4I कितना होगा? 200. तो अगर हम प्रिंसिपल प्लस 4I में से 4I घटा देंगे तो हमारा 1000 नहीं बचेगा. 1200 में से 200 हटाएंगे तो क्या बचेगा? अच्छा, 1000. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है P प्लस I वाला, this will help you in many questions. Third type of question is when they will ask interest for a certain number of days. So the question would be like this. Let's say there is a principal of 12,500 rupees. SI is 20%, or it could be anything, or just I'm taking 20%. Find the interest for 25 February to, not February, right, in 1 March to 12 May. So generally, you know, if interest is for 1 year is I, so for half year it will be I by 2. Okay, so it will be divided into as much as part जितना आप एक साल का कर रहे हो. But here the question is in number of days. So in most of these questions, you will find that the number of days would be either 73 or multiple of 73. So if there are 73 days, so 73 days is what? 73 by 365, which will be 1/5 of year. The question is now reduced to find the interest for this principal at this rate of interest for what time? 1/5 of the year. So if it will be 146 days, then you'll say 2/5 of the year. Similarly, so 1/5 of the year. Now you can use whatever way is easy for you, depending on the question. Here I can just see that if we are getting तो ये 20%, फर्स्ट मार्च तो 12 में लिखा है ना आपने?
हाँ, सो सर 73 डेज कैसे हुए मतलब? मार्च में कितना होता है 31, अप्रैल में कितना होता है 30, 61 हो गया, 12 में तो तो 73 आवाज डेज नहीं आ होता रही, थोड़ी कम आ रही है। है। मार्च में कितना दिन होता है 31, 31, यस सर। अप्रैल में 30 ओके ठीक है। और प्लस 12। और 12, ओके ठीक है। मैं थोड़ा So कंफ्यूज। basically even it is 72 days na, you will take 73 only na. ओके सर। Sometime they might give you a data which will give you 72 days, so it will not change the interest much. Okay, so here what ओके I'm सर। seeing is that in 1 year you are getting, or you have to give 20%. So in 1/5 of the year you just need to give 4%. So 4% of this quantity would be 125 into 4, which is 500. The answer would be 500. ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है when they will say that for a particular condition where number of year and number which represent percentage, which represent percentage of SI is same. ऐसे कंडीशंस को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं. So the general question is, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. Rupees 1200 became 1308 by a simple interest for as much as time as as much time as much as time as much as नहीं, इसको क्या अंग्रेजी में लिखेंगे? SI for as much time as percentage rate, नहीं, SI percentage. मतलब इसका मतलब यही हुआ कि एक प्रिंसिपल है, वो R% से R ईयर में 1308 हो गया, मतलब 100 R% से R ईयर में 1308 हो गया. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R? ठीक है, इसी को मल्टीपल तरीके से वो पूछ सकते हैं, है ना. कभी कभी मतलब दे कैन यूज इंग्लिश विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. मतलब ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे, ऐसा सिनेरियो बनाएंगे विच, बट अंडरलाइन क्वेश्चन यही होगा जिसमें आपके सीन, वहां पे क्या सीन होगी कि जो आपका परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ ईयर के बराबर है. तो इस पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि 2% इंटरेस्ट होता तो कितने साल के लिए होता? 2 years के लिए. और टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलता परसेंटेज में? 4% मिलता ना. सब लोग होना यहीं पे. अगर Yes, बीच बीच में बोलते रहा करो. इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वट एवर आई एम टीचिंग ना, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स. तुम लोग इस बात को समझते नहीं हो. तो 5%, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, तो इट विल बी फॉर 5 years, क्योंकि ये कंडीशन तभी मेंटेन होगा जब दोनों बराबर. सो द टोटल इंटरेस्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज 25%.
So you can just see it is getting multiplied 2 into 2, 5 into 5. तो अगर यहाँ पे 36% टोटल इंटरेस्ट है इन सिमिलर कंडीशन, तो हमारा रेट क्या होगा? 6%, ईयर क्या होगा? 6 ईयर. And you can have fractional number also. So if you are getting 100 by 9% as an interest, आपका रेट क्या होगा? 10 by 3%. और टाइम क्या होगा? 10 by 3 year. So whenever I have two quantity, जैसे 1200 and 1308, the total interest we are giving is 108, which is 9% of 1200. And the moment I got 9%, I can just say that rate is 3% and the time is 3 year. तो जो भी पूछा होता है यहाँ पे, whatever they have, they will ask, you can just answer that. ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Tell me. Yes, ठीक है. अब फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो. Fifth type of question is very interesting. तो उसके लिए first I'll have a viva for you. बताओ कि if a money gets doubled, or in order to get the money gets doubled, in order to get the money double, how much interest do you need? कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा? जल्दी बताओ. किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपका पैसा कब डबल होगा? 100%. यस, 100%. तो एक तो ये है कि इन हाउ मच टाइम मनी विल गेट डबल्ड. तो अगर आपसे बोला जाए कि इफ 10% एसआई है तो कितने टाइम में डबल होगा? 10 years. 10 years. बिल्कुल सही. और अगर 20% है तो ये तो हम ही लिख दे रहे हैं 5 years. आई विल नॉट आस्क यू. तुम मुझे बताओ अगर 15% है तब कितने साल में डबल होगा? six point six something. हाँ, 6/2/3. मैंने कितनी बार बोला है मिक्स फ्रैक्शन का यूज करो. तो 15 15 15 ऐसे करके आपको 6 साल में 90 हो जाएगा, नहीं? Yes, sir. एंड देन यू नीड 10 more. तो इसके लिए 2/3 year और लगेगा. तो 6 year, 6/2/3 year में योर मनी विल गेट डबल. ठीक है. और रिवर्स आपसे पूछा जाए, इफ मनी गॉट डबल्ड इन 7 years, तो एसआई कितना होगा? If money got doubled in 7 years, what will be the SI? Now,
क्या करना चाह रहे हो बताओ? 100/7? नहीं। यस सर। यस और 100/7 कितना परसेंट होता है? 14/2/7%। तुम लोग वो नहीं बनाए हो क्या टेबल, परसेंटेज टेबल? सर बनाया। वो बनाया है पर ये याद नहीं रहता। अरे याद रखो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात कि इफ, अब देखना देखना ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लगते हैं। इफ मनी गॉट 4 times in 15 years, then in what time it will get 11 times of principal? ये बताओ मुझे, 11 times of principal। तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि in order to be 4 times, how much interest is needed? So 20%. 300। कितना? 20. 40%? 4 गुना करने के लिए 40% चाहिए? क्या बात कर रहे हो? 40%? 300। नहीं सर, थ्री थ्री I हंड्रेड said परसेंट 20. नहीं नहीं, 300%, सी इज राइट। आपके पास 100 तो है ही। इफ यू विल गेट 300 मोर, then it will become 400, which is 4 times of the principal. So always remember, आप अगर 8 गुना चाहते हो, if you want to be 8 times, you need 700% interest. So for 4 times you need 300% of interest. To be 4 times you need 300%, which is becoming, or which is get, the time you are taking for that is 15 years. Then for 100%, the time you will take is 5 years. You don't have to calculate SI for this. You just can calculate the required time by this. And to reach 11 times, you need 1000%, yani 1000%. To become 11 times of the principal, you need 1000%, and the time you will take for that is how much? 50 years. आ रही बात समझ में? यस सर ये नहीं आया समझ। देखो, 4 गुना के लिए आपको 300% चाहिए, चाहिए ना? यस यस सर। सर हम और 100 ले रहे हैं ना प्रिंसिपल, नहीं, कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर 300 कैसे होगा? 300% बोल रहा हूं मैं, अच्छा अच्छा ओके। परसेंटेज में बात कर रहा हूं मैं। फॉर 4 times, टू बिकम 4 times, यू नीड 300% मोर। ओके। ठीक है, तो 300% के लिए आपको 15 ईयर लग रहे हैं, 15 ईयर्स। नहीं, यस सर। और सिंस इक्वल टाइम इक्वल परसेंटेज, यही तो होता है ना ऐसे में। हम्म। तो 100% के लिए 5 साल लगेगा, हाँ। 300 के लिए 15 साल, 100% के लिए 5 साल। हम्म। और सेकेंड लाइन बोलता है कि आपको 11 गुना कर देना है। यू हैव टू मेक इट 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स के लिए कितना परसेंट चाहिए? 1000%। नहीं, बोलो। सही 11 टाइम्स वाला ही नहीं, ये 1000 कैसे हो रहा है? अरे P plus
10p होगा तब तो 11p बनेगा ना। हाँ 10p कितना परसेंट होगा? 1p is हाँ 100%. So 10p is 10 into 100%. अच्छा 1000। तो यही तो 1000 है। अच्छा ओके। ठीक है, अब दिख गया। यस तो अब 100% के लिए आपको 5 साल लग रहे हैं, तो 1000% के लिए विल टेक 50 years। नहीं, यस तो ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस यस सर। Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही सोचना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप। कितना, 5 हो गया ना? सिक्स्थ, सिक्स्थ में वी विल टॉक अबाउट कि वी आर नॉट गिविंग द इंटायर मनी or returning the entire loan in one go. What if we dispose some of the amount in between the tenure also? जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस कंसेप्ट के लिए, एंड देन यू कैन यूज द सेम कंसेप्ट इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने लिया 2000 का लोन, प्रिंसिपल 2000 रुपए का लोन, इंटरेस्ट आपका है 20%। एंड इट इज नॉट सेड कि 1 साल 2 साल, उसने ऐसे लिखा है कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, मतलब लोन लेने वाला आदमी ए है, मान लो ए टुक 2000 रुपीज लोन फॉर 20%। आफ्टर 1 ईयर he returned 500 rupees. So what will be the amount he will have to pay in second year to settle the loan? ठीक है, टू सेटल द लोन। तो क्या हुआ इसमें कि आपने 2000 रुपए का लोन लिया एंड यू आर नॉट कीपिंग द इंटायर 2000 फॉर 2 years। आपने 1 साल के बाद 500 रुपया लौटा दिया, एंड ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर 2 ईयर और सेकेंड ईयर के बाद कितना पैसा दिया जाए कि लोन अमाउंट सेटल्ड हो जाए। तो सबसे पहले तो ये हम लोग छोटे ब्रेकअप कर लेते हैं। लेट्स डू सम ब्रेकअप कि हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा 2000 प्रिंसिपल प्लस आई विल ऑल्सो हैव टू पे 400 एज एन इंटरेस्ट। 2000 का 20% होता है 400। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ नहीं है यहां तक? अब जो क्लियर 500, हाँ, अब जो हमें 500 रुपया वापस करना है, ऑलवेज रिमेंबर कि बीच का दिया हुआ पैसा, उसको अंग्रेजी में जैसे भी बोलो, एनी मनी पेड इन बिटवीन will go from प्रिंसिपल। कोई भी पैसा बीच में लौटाते हो तो प्रिंसिपल से निकलेगा। तो ये जो
500 रुपया दिया आपने, कहां से दिया? इस 2000 का, इस 400 का नहीं। समझ में आ रहा है? ये बेसिक कंसिडरेशन है सिंपल इंटरेस्ट का, सबको समझ में आ रहा है? द टोटल अमाउंट विच इज ड्यू इज 2400। तो ऐसा नहीं है कि 24 माइनस 5 करके 1900 इज टोटल ड्यू नाउ, ऐसा नहीं करना है। वी विल रिटर्न द 500 फ्रॉम प्रिंसिपल। तो 2000 में से 500 कम हो जाएगा, and the amount that is there now with you is 1500 plus 400। ये 1500 प्रिंसिपल का और 400 रुपया इंटरेस्ट आपने जो दिया नहीं, वो एक्यूमुलेटेड है आपके पास। तो सेकेंड ईयर में आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता नहीं है, तो आपको जो टोटल पैसा लौटाना है वो है प्रिंसिपल जो कि 1500 है, और प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट विच इज 300, 20% ऑफ 1500, एंड द अर्लियर इंटरेस्ट जो आपने नहीं पे किया है। द टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज 2200। ये बात समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये 300 कैसे आया, कहाँ? हमारा प्रिंसिपल बचा हुआ है 1500, यस। तो उसका तो इंटरेस्ट देना है ना हमें। पर वो, अच्छा अच्छा, हाँ। इंटरेस्ट रेट तो वही है 20%, ठीक है। तो 300 रुपया। देख रहे हो, आई एम टॉकिंग इन लिटरेचर टर्म, आपको वैसे ही याद रखना है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई विल आस्क यू व्हाट वाज द सिचुएशन, आपको नंबर्स में नहीं लैंग्वेज में बताना है कि सर आपने ये बात की थी, क्योंकि मैथ्स इज जस्ट लैंग्वेज, इसमें नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि आपने 1500 का लोन लिया, इंटरेस्ट आपका 20%, एंड इन 3 year you return 500 each year. Now after 10 years, what will be, after 10 years, what will be the amount that you have to return? ठीक है, तो फटाफट इसको चेक करो क्या है। हम एक एक करके चलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 1500। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? 1500 प्लस कितना, बताओ कितना हो जाएगा? 300 रुपया, ठीक है। 20% ऑफ 1500। अब यहां तुमने लौटाया 500 रुपया, तो वो कहां से जाएगा? 1500 में से। तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1000। सेकेंड ईयर में क्या होगा? आपको मिल जाएगा इस पे भी इंटरेस्ट, 1000 पे 200 रुपया, और ये 300 रुपया मेरा कंटिन्यूड हो जाएगा। और फिर हमने यहां से 500 रुपया निकाल दिया, वो भी कहां से निकलेगा? प्रिंसिपल में से। तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 500 रुपया। इन थर्ड ईयर आपके पास अमाउंट हो जाएगा 500 प्लस 500 का 20% विच इज 100 प्लस 200 प्लस 300, और इस साल आपने फिर से 500 रुपये निकाल दिया। सो बेसिकली योर प्रिंसिपल बिकम 0। अब बात अगर फोर्थ ईयर की है या 100 साल बाद की है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जो पूछा है 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कुछ भी हो, आपको अब इंटरेस्ट नहीं देना है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली रिटर्न ऑल द प्रिंसिपल. The only amount that you will pay is the interest amount which was accumulated without any added interest. So after 10 year, 20 year, 25 year, all will have same answer, 600 rupees. ये समझ में आया? Yes, sir. है ना सिंपल? यस सर थोड़ा कनेक्शन हो गया था, थोड़ा बता देंगे? हाँ, मतलब इसमें क्या है कि 3 बार में सारे प्रिंसिपल निकल गए. यस सर. तो अब आप 3 साल के बाद चौथा साल, 5वां साल, छठा साल या 10वां साल या any year, after any year, you will just return the interest which was accumulated and which you could not give. हम्म. तो वो 600 मतलब रुपया ही क्योंकि देना है. 500 पे लगेगा अब अगला नहीं, अब साल. कुछ पे नहीं लगेगा ना, तो सारे रिटर्न हो गए ना. सर जैसे 3 साल. आपने क्वेश्चन में लिखा 10 years तक का है ना, उसके बाद 7 साल. नहीं, हमने बोला कि 3 बार उसने 5-5 100 रुपये रिटर्न कर दिए. अच्छा ओके. तो आपका ये रिटर्न जो है पूरा प्रिंसिपल रिटर्न हो गया. हाँ हाँ ठीक है. तो आप गॉट नो प्रिंसिपल हियर. तो आपको अब कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो जो बचा हुआ पैसा है वही लौटाना है. ओके ठीक है. ठीक है, तो ये है. अब इसी का यूज हम लोग करते हैं कि ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए. कि जैसे मान लो अगर बोलता है कि 5000 रुपीज है, व्हाट ईयरली इंस्टॉलमेंट should be there for 2 years to dispose the loan. तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि आपको 2 साल में लोन खत्म कर देना और इक्वल इक्वल अमाउंट देना है. तो आई नो द कंडीशन दैट, और हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, मान लो 20% एसआई के लिए. तो आपको पता है कि 5000 आफ्टर 1 year it will become what? 5000 plus 1000 इंटरेस्ट. अगर आप इसमें से x रुपया लौटाओगे, it will go from 5000. The principal will be left is 5000 minus x. और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में ना इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछते हैं, बिकॉज सी कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इक्वेशन बन जाएगा, यू विल हैव एन इक्वेशन टू सॉल्व. तो अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ दिस अमाउंट. तो वो कितना होगा? तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा 5000 माइनस एक्स, ये तो प्रिंसिपल बचा हुआ है वो, प्लस इसका इंटरेस्ट विच इज 5000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5. 20% निकालना है ना हमें, तो हमने इसका 5 कर दिया, और प्लस इनिशियल इंटरेस्ट जो हमने अभी तक नहीं लौटाया है. और ये सब मिला के किसके बराबर हो जाना चाहिए? एक्स के बराबर. तो ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड द इंस्टॉलमेंट. तो थोड़ा इक्वेशन वाला हो जाता है, इसलिए दे जनरली डोंट आस्क. बट हाँ, आप लोग इसको समझ पा रहे होगे कि क्या हमने किया है. समझ रहे हो? Sir, how is it equal to X? I didn't understand. क्योंकि बात ही हो रही है ना कि ईयरली इंस्टॉलमेंट में, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है. तो हमें इनिशियली एक्स ऐसे ही निकालना है कि बच के फिर एक्स बचे, तभी तो ईयरली इक्वल होगा ना. दिस एक्स शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट. तो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बनेगा. समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. हमने मान लिया कि एक्स निकाला, तो हमारा प्रिंसिपल बच गया 5000 माइनस एक्स.
सो आफ्टर सेकेंड ईयर ये प्रिंसिपल 5000 माइनस एक्स, फिर उस प्रिंसिपल पे 20%, दैट इज 5000 माइनस एक्स बाई 5, और वो 1000 मेरा बचा हुआ. These all quantity together should be equal to x, तभी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बना. And if you will solve this, I'll find the equal installment for 2 years. 3 साल के लिए तो कभी पूछ ही नहीं सकते सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है. So now actually I have told you everything which can come in simple interest. इसके अलावे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस चैप्टर में, that will be coming from ratios or allegation. I'm just giving an example जिसको हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो में कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि a man had 3 lakh rupees. He divided into 2 child A and B, है ना. A, the age of A is 8 years, age of B is 16 years, and he divided in such a way that they both will have equal amount at the end of 21 years, and put those money into bank which gives you 10% of simple interest. So basically क्या हुआ, ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया, रेशियो टाइप का. The different type of question they can ask is, a man invested in 2 schemes, scheme A, scheme B, which gives 20% and 30% rate of interest on CI. ठीक है. Let's say they give you the amount also, just say 1 lakh rupees what invested, and after 2 years he got 1,48,000 rupees. So what was the amount invested in A and what was the amount invested in B? तो ये भी मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट जो हमने तुम्हें बता चुके हैं उसका, और इट ऑल्सो टेक्स सम अदर कंसेप्ट विथ इट. तो आप जब एक्सरसाइज करोगे, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल टेल यू देयर. ठीक है. तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का सारा कंसेप्ट्स. कल तो नहीं, परसों की क्लास में वी विल डू कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तब तक तुम लोग सारा कर लेना. कल हम लोग एक डाउट क्लास रखेंगे एट 10 PM. ठीक है.